Vlastně uvinul jistý. First over is in progress. Having some technical glitches here. I think those have been sorted out now. Sultan Warriors, Baramulla, Dadoo Rangers. Two strong teams. And Kulwinder is bowling from the market end. On strike is Nasir Kumar, the talented youngster. Comes down the wicket, not getting hold of that. He was trying to go over the top since the field is inside the circle. First 6 overs of the power play. There's a short mid-wicket in place. Deep backward square leg is on the boundary. Third man will stay on the boundary. Two fielders. Permitted outside the ring for first 6 overs of the power play. Now third man is coming inside the ring and mid-on has been asked to go on the boundary all the way. Nasir Kumar, he likes to score freely. Gets a freebie. These are easy pickings and helped on its way down to the long leg boundary for 4. What a way to get off to the start. Off to a very good start. Slower delivery attempted. Gone wrong. The line was wrong. The length was awry. And it was helped on its way down to the long leg boundary for 4. That boundary opens the account for Dadoo Rangers. They're 4 without loss. As that one kept low. Sneaked underneath the bat and went into the gloves of the wicketkeeper. Dot to finish the first over. After the first over, it's 4 without loss. Nasir Kumar in the previous edition, the second edition of Bijbehara Premier League, he was looking unstoppable. The barrage of strokes he played, the repertoire he showed was outstanding. He's an onside dominant player, but from the school end, it's going to be left arm seamer Imtiaz. And on strike is Adil Guldan. Third man is inside the circle. There is a gully, a point
on top of the ring. There is an extra cover inside the ring as well. Mid-off is fairly deep on the edge of the circle there. Imtiaz, the left arm seamer. He has got a good repertoire of those cutters. Takes the pace off abruptly and surprises many a batsman. Not an easy customer to get away from the word go. Mid-wicket is inside the circle. Adil Guldan, he likes to score freely as well. Likes pace on the ball. He gets off strike. He's off the mark with that single. A gentle clip of the thighs down towards the backward square leg. Sultan Warriors, Baramulla, Dadoo Rangers. High voltage, high octane contest. Because many of these players, they have played with each other. They have been teammates playing for the same franchise. Nasir Kumar, well, he's trying to get on top of the ball. But so far, barring that short delivery that he helped on its way to the boundary, he hasn't got off to the blocks. He's looking edgy. Short fine leg is inside the circle for Nasir Kumar. He goes for the faulty stroke. Inside edge, the ball is trickling away to the fine leg boundary. Will be just a couple of runs as the ball slows down on its own before Kulwinder picks it up and throws it in. 2 more runs to Dadoo Rangers. Takes them to 7 without loss in over number 2. Ground dimensions towards the offside, towards the onside, particularly towards the leg side in that backward of square region. Call it that fine leg region, square leg region, mid-wicket region, and that straightish mid-on region. It's fairly longer dimensions on the offside from the school end. If I'm talking about the dimensions, well, they are quite lesser as compared to the onside of the batsman. Punches it but finds the fielder at mid-off, no run. So far it has been a sedate start. Both the bowlers, they have tried to take pace off. And that has been a good strategy here on this pitch. Any bowler who wants to put pace on the ball has travelled. Imtiaz. And he has bowled him! You miss, I hit, bullseye! And Nasir Kumar is on his way. First blood has been drawn, and this is an important wicket. A huge blow to Dadoo Rangers. Nasir Kumar is back to the dugout. Dadoo Rangers have lost their first wicket. I welcome my fellow Hindi commentator Manzoor Bhai. It has been a start nobody expected from Nasir Kumar, because he is a batsman who likes to play strokes up front, likes to use pace, but there was no pace given by the 2 bowlers, be it Kulwinder or be it the left arm seamer from the other end. Both the left arm seamers are causing problems, and that's why a foul shot came into play and he was castled. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश आमदीद सभी का करना चाहेंगे बिजबिहारा स्पोर्ट्स फील्ड से एक बड़े मुकाबले के साथ। 2 बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट की आमने सामने हैं आज। डडू रेंजर्स और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की अगर बात करें, और पहला नुकसान डडू रेंजर्स को उठाना पड़ा, वो भी बहुत बड़ा विकेट नासिर कुमार का। जैसे बात हो रही थी कि पेस दे नहीं रहे हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के गेंदबाज, वो जानते हैं कि इस विकेट पे अगर आप पेस देंगे तो बल्लेबाज उस चीज़ को पसंद करता है और यहाँ पे शॉट्स लेता है, लेकिन गति में काफ़ी नियंत्रण देखने को मिला है दोनों छोरों से, कुलविंदर और इम्तियाज लेफ्टी। और अभी भी नासिर कुमार का एक बड़ा विकेट इम्तियाज लेफ्टी ने चलता किया और कुलविंदर नए ओवर के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आदिल गुलडान उनके सामने रहेंगे। हल्के से खेलकर एक सिंगल चुरा लिया है, हालांकि इम्तियाज लेफ्टी उस ओर जरूर थे, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों खिलाड़ियों द्वारा।
और आसिफ मंजूर टीम के कप्तान अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं डड्डू रेंजर्स की ओर से। और अगर देखा जाए ऑफ साइड के 30 गज दायरे के अंदर शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी है, पॉइंट बैकफुट पॉइंट के साथ शॉर्ट कवर, मिड ऑफ और शॉर्ट मिड विकेट के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक खिलाड़ी मौजूद हैं। कल यहाँ पे मुकाबला हुआ था सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, एक तरफा मुकाबला बना दिया था सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने और मात्र 72 रन पर ऑल आउट किया था सिमटेक्स स्टार्स की टीम को। जहांगीर लोन के बगैर ये टीम उतरी है इस मैदान के अंदर। और जिस तरह कल प्रदर्शन यहां रहा था जहांगीर लोन का, चाहे बल्ले से बात की जाए या गेंद से, 2 विकेट गेंद से उन्होंने ली थी और 36 रनों की लाजवाब पारी 17 गेंदों के अंदर उन्होंने खेली थी। लेकिन आज की उनकी कमी जरूर यहां खेल रही होगी। अच्छी गेंद कुलविंदर द्वारा एक बार फिर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की ओर निकलते हुए। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला फुल पैकेट टीम ये हैं और होमवर्क करके ये टीम आई है डडू रेंजर्स के खिलाफ। मालूम है कि यहाँ किस तरह गेंदबाजी करनी है। अगर आपके पास वेरिएशन से, कल भी हमने देखा आप बल्लेबाजों को तंग इस विकेट के ऊपर कर सकते हैं और अब तक गति दी नहीं है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के गेंदबाजों ने। कुलविंदर सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं गॉर्डन एंड से और आसिफ मंजूर टीम के कप्तान जो अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। स्कोर की अगर बात की जाए 12 हैं बगैर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पारी का ये चौथा ओवर डाला जा रहा है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स जरूर आ रहे हैं लेकिन चंद ही समय में वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा ओवर पारी का प्रगति पर 12 है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। विशु खत्री जो है नए बल्लेबाज आए हैं, माफ कीजिएगा, बल्लेबाजी करने के लिए। कुलविंदर सिंह अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट और इस बार पटकती हुई गेंद, हालांकि खेलना जरूर चाह रहे थे लेकिन उंगलियां यहां फिर रहे हैं। अगर कुलविंदर सिंह की बात करें, वो जानते हैं कल भी इस विकेट पे उन्होंने गेंदबाजी की। उन्हें मालूम है कि आप अगर बल्लेबाज को पेस देंगे तो यहां रन्स पड़ेंगे। आउटफील्ड कमाल का है इस मैदान की। अगर हम बात करें ऑफ साइड की डायमेंशंस या ऑन साइड की डायमेंशंस अगर देखें, कमाल का ये ग्राउंड और कमाल का ये आउटफील्ड है इस मैदान के ऊपर। फुल मार्क्स, फुल रिवार्ड्स आपको मिलते हैं। शॉट्स की अगर हम बात करें, नए बल्लेबाज विशु खत्री आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार टैप किया ऑन साइड की और एक सिंगल वहां चुराएंगे बल्लेबाज। इस सिंगल के साथ ही स्कोर 13, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवरों का खेल जो है वो समाप्त होता हुआ। बात अगर सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की जाए इरशाद भाई, तो आज जहांगीर लोन इस टीम का हिस्सा है नहीं, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी जरूर खलेगी। कप्तान भी है और कल जिस तरह उन्होंने इस विकेट के ऊपर प्रदर्शन किया था, भले से 36 रनों की लाजवाब पारी और फिर गेंद से भी उन्होंने कल 2 विकेट निकाले थे, तो उनको आज सुल्तान वॉरियर्स डेफिनेटली मिस करेगी। हालांकि नदीम डार आज टीम के कप्तान हैं। I agree 100% because that late flourish would be missing today. Jahangir Lone in previous 2 matches was looking outstanding and unstoppable, scoring a brisk 50 against Bijbehara Sports Club and scoring a fiery 36 the other day. That stroked back along the bowler. Will that go down as a chance? Definitely want to have a look on that. That was timed beautifully by Vishu Khatri. He has replaced Jahangir Lone today. Will be quite long shoes to fill because Jahangir Lone, the kind of flourish that is glorious. Stand and deliver stuff from the right hand Adil Guldan. That was in his slot and he is not gonna miss onto that. Over pitching, a gentle delivery on the off stump and he puts it away over the top. No fielder and that was going away to the boundary since it left the bat. 4 runs. First boundary from the bat of Adil Guldan and now a misfield. Probably that bad bounce. That's what he is signalling to Zur Zolo. And buddy, I got a bad bounce and that's why I was not able to pick it up cleanly, by the way. Single resulting. Vishu Khatri is on strike now. Wanted to repeat. The fielder is beaten. He gets it away. That will not go down into the boundary. The batsman will come back for a brace. 2 easy runs. There was a fielder at short mid wicket is OS Baba.
inside edge. The ball was trickling away, and the fielder was quite late to react, and that's why he was beaten. And he misfielded. Misfielding sometimes cost you runs, and those runs are very useful in the end. That is a gorgeous shot. No need to run for those. Leaning into the shot, just a push, and the pace of the bowler has taken it to the cover boundary for 4. Brilliant shot from Vishu Khatri. Lovely hands, using the pace of the bowler. You can't give pace to the likes of Vishu Khatri. Now he has launched it. Has that gone all the way? We'll wait for the umpire's signal. One bounce into the mid-wicket boundary. This time a beautiful pick-up shot. And once again pace given, and it was punished with disdain. Boundary to finish the over. 4 overs done. The total is 29 for 1. जी हाँ, 4 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 29 रन हैं बोर्ड पे. एक विकेट गवा चुकी है डडू रेंजर्स. नासिर कुमार को इम्तियाज लेफ्टी ने क्लीन बोल्ड किया था. और स्कोर कार्ड जो लोग पूछ रहे हैं कि अपडेट होगा, बिल्कुल टेक्निकल टीम लगातार बनी है और चंद ही समय के बाद स्कोर कार्ड भी शो हो जाएगा. कुलविंदर सिंह 2 ओवर अब तक कर चुके हैं. ओवैस बाबा को भी गेंद सौंपी नहीं गई है कप्तान द्वारा. कुलविंदर सिंह 2 ओवर कर चुके हैं और इम्तियाज लेफ्टी जो वाहिद कामयाब बॉलर अब तक रहे हैं. एक विकेट नासिर कुमार का, बड़ा विकेट फ्लो में नजर आ रहे थे नासिर कुमार, और हम जानते हैं कि इससे पहले भी काफी लाजवाब पारियां नासिर कुमार के बल्ले से लगे हैं. और जिस शैली के बल्लेबाज हैं, जो स्ट्रोक प्लेयर हैं नासिर कुमार, विकेट पे अगर वो रुक जाते तो सुल्तान वॉरियर्स के लिए सरदर्द जरूर बनते. लेकिन इम्तियाज लेफ्टी ने उन्हें चलता किया. क्लीन बोल्ड. नया ओवर पारी का शुरू होने जा रहा है. गेंदबाजी में एक और बदलाव. सुबोध बाटी को अब गेंदबाजी के लिए कप्तान ने तलब किया है. जी हां, जहांगीर लोना जिस टीम का हिस्सा नहीं है, और नदीम डार आज टीम के कप्तान हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की ओर से. आदिल गुल्टान अभी भी एक छोर से बने हैं और उन पर भी निगाहें रहेंगी. जिस तरह के बल्लेबाज, जिस शैली के बल्लेबाज आदिल गुल्टान हैं, स्ट्रोक्स लेना पसंद करते हैं. और पिछले मुकाबले में 63 रनों की शानदार पारी आदिल गुल्टान के बल्ले से देखने को मिली थी. नए ओवर की पहले गेंद टैप किया है. सिंगल चुराने का प्रयास किया था वहां पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग ओवैस बाबा द्वारा. और अब तक खामोश रखा है आदिल गुल्टान को एक छोर से सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के गेंदबाजों ने. और उन्हें मालूम है कि आदिल गुल्टान स्ट्रोक्स लेना पसंद करते हैं और काफी ताबड़तोड़ सलामी बल्लेबाज हैं. अगली गेंद, और इस बार गेंद को हल्के से खेला. हालांकि रन एक बार फिर चुराने का प्रयास, लेकिन अच्छी फील्डिंग बैकफुट पॉइंट रीजन पर जो खिलाड़ी मौजूद हैं. सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला तीसरा मुकाबला इस टूर्नामेंट के अंदर खेल रही है. पहला मुकाबला बिजबिहारा स्पोर्ट्स क्लब से ये टीम हारी थी, लेकिन कल एक तरफा मुकाबला बना दिया था सिमटैक स्टार्स के सामने जब ये टीम उतरी. 72 रनों पर ऑल आउट किया था. आदिल गुल्टान फिलहाल सिंगल्स लेते हुए एक छोर से 8 पर वो जाकर पहुंचे हैं. ठीक 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. और मैदान के चारों ओर अगर नजर दौड़ाई जाए तो खचा आज स्टेडियम भरा हुआ नजर आ रहा है. बिजबिहारा स्पोर्ट्स फील्ड का ये खूबसूरत मैदान, और क्वालिटी क्रिकेट है इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें. और इस बार पुल करना चाह रहे थे, पटकती हुई गेंद आई थी बल्लेबाज को. विशु खत्री पोजीशन में थी नहीं स्ट्रोक को खेलने के लिए. बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगे, खुशकिस्मत रहे कि गेंद नो मैंस लैंड में जाते हुए एक और सिंगल. अच्छा प्रयास वहां पर गेंदबाज सुबोध बाटी द्वारा पटकने की कोशिश की थी. और ये स्कोर कार्ड जो है अब अपडेट भी हो रहा होता हुआ. आरजे बशीर की प्रशंसा करनी होगी और जितनी भी टेक्निकल टीम यहां मौजूद हैं. अगली गेंद लेकर आदिल गुल्टान है सामने, और इस बार हल्के से इस गेंद को खेला है शॉर्ट थर्ड मैन रीजन पर. एक सिंगल और चुराते हुए आदिल गुल्टान की अगर हम बात करें
हालांकि विस्फोटक बल्लेबाज हैं, शुरुआत में स्ट्रोक्स लेना पसंद करते हैं, लेकिन जिस तरह गेंदबाजी हो रही है, जो पेस कम की जा रही है और बल्लेबाज को सोचने में मजबूर कर रही है, होमवर्क करके सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के गेंदबाज नजर आ रहे हैं. They have been spot on so far, but Adil Guldan has been equal to the task. He hasn't played any rash shot yet, and he has looked to rotate the strike. That's a good thing to do when the boundaries are not coming. Well, you ought to just rotate the strike, keep the scoreboard ticking, and that's the name of the game. When the bowlers are not giving you anything, try to just rotate the strike, try to wait for the odd ball, and then just set up yourself, set a tone, get the momentum your way first up, and then use that momentum. It's not about T20 format, it's not about any format when it wants a sensible approach, and that is shown so far by Adil Guldan. Nasir Kumar, he tried to go after the bowling, which was disciplined right from the get-go, and that's why he was dismissed. He was bowled by a slower delivery that kept low as well from the left arm seamer Imtiaz lefty. So far 32 for 1, 5 overs have been bowled. Vishu Khatri is batting on 13 of 10. Adil Guldan is batting on 9. Well, we have a message, a loud and clear message. It's so simple that increase in crime, robbery, suicides, every crime that is prevalent among the society, well, is a menace, and the root cause of that is drug abuse. Stay away from drugs. Say yes to life, because life is beautiful. Cricket is beautiful. Sport, every kind of sport is beautiful, and right now we are focusing on an important match between Dadoo Rangers and Sultan Warriors Baramulla. Change in bowling, spin has been introduced, and the skipper has introduced himself into the attack. Nadeem Dar, he's got mid-wicket on the boundary for the right hand, because Vishu Khatri really likes to take the short ball on. Power play is still in progress. This time he goes downtown, clears mid-wicket, and that's gone into the cow corner fence for 4. Brilliant stroke, targeting the boundary, targeting the vacant areas. It's not about hitting and swinging wildly. He's targeting those areas where there is real estate. There are acres of space and there is no fielder, and that's what he's doing. This is smart batting from Vishu Khatri. This is his third boundary, moves to 18, and he's putting up a good, nice partnership between the umpire and the stumps now. Round the stumps, this has gone up in the air. That is that foul shot. Owais Baba is underneath. He doesn't drop many. A send-off, and Vishu Khatri is on his way. He was looking so good. That is the beauty and smartness of the likes of Nadeem Dar. He switched round the stumps, came between the umpire and the stumps, and once again he was trying to just unsettle him, but in turn he got unsettled. That one high onto the bat, up in the air, easy catch at mid-off. Owais Baba safe as houses, and Dadoo Rangers lose their second, 37 for 2 over number 6, and out comes the skipper Asif Mars. Hails from South Kashmir, plays for Dadoo Rangers. He's an integral part, and recently he was given the responsibility of captaining the side. Not an easy job, Manzoor Bhai, talking about captaining a side, that it's not everybody's cup of tea. You need to be spot on with your decisions. You need to marshal your troops when you're fielding, and you need to send positive vibes in that dressing room when you are sitting amongst your players. We have seen so many captains, but it's not an easy job. That's why you see Mahendra Singh Dhoni
with that cool, calm head on his shoulders and sending those positive messages and vibes whenever there was pressure on his players, and the players yielded those positive results as well. Captaincy has not been an easy job, and Asif Manzoor has to showcase that today. He has to lead from the front because 2 wickets down, early bit of bother for his team. He needs to lead from the front. Gully in position, slip fairly deep on the edge of the circle, guides it but finds the fielder coming from back with a point. Cannot be any runs, it's a dot ball. Nadeem Dar, talking about Nadeem Dar, what he does best is he slows the deliveries up. He's not a massive spinner of the ball, but he tries to bowl well within himself. He tries to bowl wicket to wicket, slow the pace up. That wasn't a slower delivery, misfielded by Imtiaz lefty. Asim Bashir from long on has to cover a bit of ground. In the meantime, the batsmen cross over for 2 more runs. 38 for 2. Final ball of the 6th over coming up. I think 6 overs have been bowled. Yes, the end of the power play. It's 38 for 2. Manzoor bhai talking about Dadoo Rangers. They were asked to bat first. Why are teams reluctant to bat first after they win the toss? We saw it happen from the last couple of matches, that the captain who wins the toss elects to field first. It looks like a belter. Nothing wrong with the pitch so far, but the odd ball does remain low, and if the bowlers take their pace off, it's quite hard to score. But we haven't seen any of the demons in the pitch, and despite that, Nadeem Dar decided to field first. Probably the pitch gets better and better as the game progresses, and that's why everybody likes to chase. But last time we saw Semtag Stars being bundled out for 72. Sultan Warriors, Baramulla, they have to restrict their opponents below 150 in order to get a chance, because we know Dadoo Rangers, they have a very good bowling attack. Good delivery to start over number 7. It's a dot ball. Score stays at 40 for 2. जी हाँ, निश्चित रूप से जो टीमें हैं वो प्रेफर करती हैं इस विकेट के ऊपर चेज करना, क्योंकि आप में मन में एक टारगेट रहता है कि आपको क्या टारगेट रहेगा, उसी हिसाब से आप प्लान करते हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आज नदीम डार टीम के जो कप्तान सुल्तान वॉरियर्स के हैं उनके जहन में चल रही होगी। एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है डडू रेंजर्स के पास, फिलहाल संघर्ष करते हुए नजर आ रही। 40 2 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर पारी का डाला जा रहा है और 2 बड़े विकेट गवा चुकी है नासिर कुमार, और उसके बाद खत्री को चलता किया गया अगली गेंद लेकर, और इस बार बाहर आए और बेहतरीन स्ट्रोक और गैप में भी है शॉट, और 4 रन मिलेंगे आसिफ मंजूर को। इस बार स्ट्रोक लेते हुए आसिफ मंजूर क्रीज छोड़कर बाहर आए और करारा प्रहार, बेहतरीन शॉट चौके के साथ। स्कोर 44 2 विकेट के नुकसान पर, और ऐसे शॉट्स आपको विश्वास देते हैं विकेट पे ठहरने के लिए, और ये प्रयास जरूर करना पड़ेगा डडू रेंजर्स के बल्लेबाजों को, और एक पार्टनरशिप की इस समय जरूरत है। आसिफ मंजूर और आदिल गुलडान की जोड़ी है मैदान के ऊपर। इस बार उंगलियां फेरते हुए स्लोअर गेंद के आने का इंतजार किया, वहां आसिफ मंजूर ने दिशा जरूर दिखा दी। बैकफुट पॉइंट रीजन पर तैनात है नदीम डार, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर 44 2 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर पारी का डाला जा रहा है, और जो करंट रन रेट हैं वो सिर्फ 6.64 के औसत से रन बन रहे हैं। ऐसे में यह चाहिए, इस बार पुल किया है, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, ऊंची गेंद लॉफ्टेड, और यहां 6 रन मिलते हुए आसिफ मंजूर को। पटकने का प्रयास किया था, इस बार कंट्रोल में इस बार आसिफ मंजूर दिखें और पुल करते हुए इस गेंद को 6 रन के लिए। छक्के के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए डडू रेंजर्स के 2 विकेट के नुकसान पर। और जैसा हम बात कर रहे थे, कप्तान
आसिफ मंजूर के कंधों पर आज जिम्मेदारी रहेंगी, किस तरह वो बल्लेबाजी करते हैं। एक बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला है, एक ब्लॉक बस्टर इस संडे आपके साथ लेके आए। और इस बार फिर स्लोअर गति से डाली हुई गेंद, बैकअप द हैंड, और वहां पढ़ नहीं पाए ठीक तरह से आसिफ मंजूर। और ये आज कर रही है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की गेंदबाजी, बैकअप द हैंड, उंगलियां फेर रही है और बिल्कुल भी बल्लेबाजों को पेस नहीं दे रही है इस विकेट के ऊपर। जब भी आप पेस देंगे तो बल्लेबाज स्ट्रोक्स लेना पसंद करते हैं। इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर्स हैं, अल सफीर टूर एंड ट्रेवल्स, अल हुदा हज एंड उमरा सर्विसेज, जो अपना सहयोग BPL एडिशन 3rd को दे रहे हैं। किस खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। नदीम डार आज काफी सफल रहे हैं बॉलिंग चेंज के साथ और खुद को इंट्रोड्यूस करके विकेट ली थी पिछले ओवर में नदीम डार ने, और एक बड़ा विकेट उन्होंने चटकाया था। 8वां ओवर पारी का होगा। नदीम डार अपना दूसरा ओवर करेंगे। फिलहाल ओवेस बाबा को आज यहां तलब नहीं किया है कप्तान ने, और एक नई रणनीति के साथ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला इस मुकाबले में नजर आ रही है। नदीम डार, और इस बार आदिल गुलडान ने बल्ला चलाया है, गेंद ऑफ साइड की ओर जाते हुए वहां पीछे खिलाड़ी इम्तियाज लेफ्टी, जब तक गेंद को उठाया जाए 2 रन बनाने का मौका है बल्लेबाज के पास। आदिल गुलडान काफी लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, लेकिन फिलहाल खामोश एक छोर से वो नजर आ रहे हैं क्योंकि दबाव की स्थिति है। यहां डैडू रेंजर्स 2 विकेट गंवा चुकी है, और इस बार स्ट्रोक खेला लेकिन सीधा जूर जोलू के हाथ में दे बैठे, और कोई गलती वहां नहीं की जूर जोलू ने। एक और विकेट, सॉफ्ट डिसमिसल, गेंद को नीचे रख नहीं पाए, वो गैप ढूंढ नहीं पाए बल्लेबाज आदिल गुलडान, और तीसरा झटका यहां पर लगता हुआ डैडू रेंजर्स को। आदिल गुलडान का संघर्ष जो है वो समाप्त होता हुआ विकेट के ऊपर। 13 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया, वो एलिवेशन ढूंढ रहे थे, वो गैप ढूंढ रहे थे, वो मिला नहीं, सीधा हवा में खेल बैठे, और जूर जोलो ने वहां कोई गलती नहीं की। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला छाई है इस मुकाबले के अंदर। तीसरा विकेट, डैडू रेंजर्स बैकफुट पे नजर आ रही है। कमाल की गेंदबाजी और कमाल की कप्तानी आज नदीम डार द्वारा देखने को मिल रही है। प्रशंसा करनी होगी नदीम डार की, जिस तरह बॉलिंग चेंज आज वो कर रहे हैं, और खुद आज अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और विकेट्स निकाल के दे रहे हैं टीम को, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। Again, the ball holding into the surface, and that's why there was no power behind the shot. There was an extra cover posted for that kind of a shot, and he fell into the trap. Nadeem Dar has his 2nd wicket, and Adil Guldan, the dangerous Adil Guldan, has walked back to the hut. It's 52 for 3. Dadoo Rangers are in early trouble here. Nadeem Dar, as I already mentioned, is a street smart customer. Not a massive spinner of the ball, but those variations, changing the length every now and then, changing the line, changing the pace, slip comes into play. The new batsman is on strike, Nadeem Dar. This time slowing the pace, bowling it wide outside the off stump. Flatter trajectory, not giving any sort of air whatsoever. The power play is done and dusted. He has got protection. He's got the leverage of giving it air this time. Tossed up, but defensively knocked away, back along the track, and bowler in his own follow through, moving towards his right fields, no run. Square leg is posted inside the ring. Now the boundary, beg your pardon, as the new batsman strokes this one down the ground towards steep middle of the batsman, set off for a single. That single takes the total to 53 for the loss of 3 wickets. Asif Manzoor is still there. He's batting on 11. Muscular guy. He likes to play strokes, but the situation demands something else. Nadeem Dar this time once again tossing the ball up. Danish Muzaffar is the new batsman. He too is a very valuable addition to this side. Danish Muzaffar contributes heavily in that middle order. And today is a stern test because he's playing against Sultan Warriors Baramulla.
Danish Muzaffar is batting on 1. Asif Manzoor is batting on 12. It's 54 for 3, 8 overs done. Dadoo Rangers. Dadoo Rangers, they need to win this in order to stay alive in the competition. And this competition is getting furious and furious. It's hottening up with every match. Change in bowling from the market end. And I think it's going to be OS, Baba. Not used up to this point because he likes to bowl quick. And that might be the reason that the captain of Sultan Warriors Baramulla, he was trying to stay away from pace. He was trying to just slow the pace of the ball, and he was not allowing the two batsmen any free leverage to free and flex their muscles. And that might be the reason that he hasn't been allowed to bowl yet. And it's no as Baba, it's left arm spin from the market end. Azim Rathar has been given the ball. He's going to bowl to the right-handed batsman Asif Manzoor. There is a long on, straightish on the boundary, long off on the boundary, mid-wicket on the boundary. Those are 3 protective fielders protecting the boundary on the onside, and we have a deep backward square leg as well on the boundary for the right-hander. On the offside, we have a sweeper cover on the boundary. Short fine leg inside the circle. Gully is fairly deep on the edge of the circle, and third man is on the boundary. Plenty of protection for left arm spinner. Talking about these left arm orthodox spinners, they are a great addition to any side. As you see, they are genuine wicket takers. They turn the ball away from the right-hander, and if the bowler is not a massive spinner of the ball, the angle just takes it away from the right-hander as well, and that causes problems to many right-handers. We see Babar Azam in international cricket struggling against quality left-arm spin, and Prabhat Jayasuriya against that test series against Sri Lanka got him out more than 3 times. That one kept low outside the off stump, went straight with the arm. He was playing for the turn, was not there. And sometimes left arm spinners pick up wickets with those straighter deliveries. We saw Rangana Herath of Sri Lanka picking up wickets in clusters, in bunches. That's a lovely on drive. Using those beautiful wrists, the batsmen are coming back for a couple. Had to scamper back, and in the end made it comfortably. I was talking about Rangana Herath. Well, many a batsman were dismissed, outfoxed, because they thought that the ball might turn. They played for turn, and many of those deliveries, many of the dismissals were on that straight ball, which that goes on with the arm, and the batsmen play for turn. They are either LBW or bowled. Rangana Herath, a genuine quality left arm spinner, causing problems to many batsmen throughout the world. These left arm spinners, well, belonging to this part of the world, they need to work on their game. They need to just slow the pace down. They need to work on those revolutions. And if a bowler puts revolutions on the ball, and then they have to just work on the pace with which they want to turn the ball, because this is a beautiful strip of 22 yards, and if a bowler has that guile and quality, well, they can just cause trouble to any batters. If not, they can play it straight into the hands of the batsman. Here is Azim Rathar, next delivery. This time he goes onside, swings hard, will come back for a couple. Fielder does well. Asim Bashir coming from deep mid-wicket. He has done well so far. He has been the fielder who has been on his toes. 2 more runs. Finish that over 9 overs done. It's 60 for the loss of 3 wickets. Dadoo Rangers are batting first after losing the toss in this all-important high-octane clash against Sultan Warriors Baramulla.
3 विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स का स्कोर है 9 ओवरों की समाप्ति के बाद 11 ओवरों का खेल आना बाकी और एक संघर्ष चल रहा है डडू रेंजर्स के दोनों बल्लेबाज जो इस वक्त मैदान के ऊपर हैं। आसिफ मंजूर टीम के कप्तान, उन्हें मालूम है कि 20 ओवर उन्हें खेलने होंगे यहां से एक कम्पिटिटिव टोटल तक जाने के लिए। 160-170 के आसपास अगर डडू रेंजर्स देखती हैं तो एक बल्लेबाज को अंत तक खेलना पड़ेगा और टीम के कप्तान आसिफ मंजूर चाहेंगे कि वो अंत तक यहां बल्लेबाजी करें। ओवैस बाबा का आक्रमण होता हुआ और आज उन्हें पीछे रखा गया। 10वां ओवर उनसे आज गेंदबाजी कराई जा रही है और उसकी वजह कल भी हमने देखा कि शॉर्ट गेंदबाजी करने का प्रयास हो रहा था, गति देने का प्रयास ओवैस बाबा द्वारा और बल्लेबाजों ने लॉब लिया। ओवैस बाबा की गेंदबाजी पर 20 रन कल उनके ओवर में पड़े थे। ओवैस बाबा गेंदबाजी कर रहे हैं नए ओवर के साथ। पहली गेंद अच्छी गेंद, हल्के से खेलते हुए सिंगल चुराते हुए 61 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर। प्रोजेक्टेड स्कोर इस रफ्तार से 133 जो कि कम्पिटिटिव नहीं माना जाएगा सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के सामने। 160-170 तक देखना चाहेगी डडू रेंजर्स की टीम और कप्तान आसिफ मंजूर के ऊपर जिम्मेदारी रहेंगी कि वो किस तरह इस इनिंग्स को अब एंकर करते हैं। स्टार्ट उन्हें मिला है 17 के निजीगत स्कोर पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और 2 बेहतरीन शॉट्स अब तक उनके बल्ले से लगे हैं और पुल पे वो छक्का जड़ा था आसिफ मंजूर ने। अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद अंदर आती हुई हल्के से इस गेंद को खेला, दिशा दिखाते हुए वाइडिश थर्डमैन पर खिलाड़ी मौजूद, एक और सिंगल। और यहां इस इनिंग्स को रिबिल्ड करने का प्रयास हो रहा है डडू रेंजर्स को, जो नुकसान 3 शुरुआत में गंवाई है डडू रेंजर्स की टीम ने, उसका रिबिल्ड फेज चल रहा है डडू रेंजर्स के बल्लेबाजों द्वारा। फिलहाल आसिफ मंजूर और दानिश मुजफ्फर के लिए ये स्टेज आज बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। किस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं क्योंकि आज मौका है यहां पे छाने का, इस मुकाबले के अंदर अपनी कला दिखाने का, अपनी क्लास दिखाने का ये सही समय है उनके पास और आज अपने आप को प्रूव करना होगा। इस मुश्किल स्थिति में डडू रेंजर्स को निकालना पड़ेगा। डडू रेंजर्स एक कंफर्टेबल स्कोर तक जाना चाहती हैं। फिलहाल आज जहांगीर लोन के बगैर हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला और टीम की कप्तानी आज नदीम डार के पास और काफी बेहतरीन बॉलिंग चेंज अब तक नजर आए हैं उनकी ओर से। और एक और सिंगल, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छी रनिंग दोनों खिलाड़ियों द्वारा और तालमेल काफी अच्छा नजर आया दोनों बल्लेबाजों द्वारा। सिंगल चुराने की कोशिश करें, बड़े शॉट्स अभी लग नहीं रहे हैं और प्रयास हो रहा है कि स्ट्राइक को लगातार रोटेट किया जाए, स्कोर बोर्ड को आगे चलाया जाए। ये रणनीति रहेगी यहां से डडू रेंजर्स को। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला दूसरे छोर से एक मुकाबला कल जीती है, कंप्रहेंसिव विक्ट्री थी वो। 72 रन के अंतर्गत सिमटेक्स स्टार्स को उन्होंने आउट किया था और मनोबल जरूर बड़ा होगा उस जीत से सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला का। 64 3 विकेट के नुकसान पर दानिश मुजफ्फर 4 के निजीगत स्कोर पे। आसिफ मंजूर 19 पर बल्लेबाजी करें। 4 सिंगल अब तक इस ओवर से आए हैं और इस बार आगे आकर गेंद को खेला है ऑफ साइड की ओर, दूसरा रन देखना चाह रहे हैं और यहां खतरा मोल लिया था बल्लेबाज ने। काफी आगे आए थे, सिंगल चुराना चाह रहे थे लेकिन सही समय पे वापस वहां पे भेजते हुए आसिफ मंजूर जल्दबाजी कर बैठे थे। वहां दानिश मुजफ्फर काफी आगे आए थे, रन चुराने का प्रयास और जोखिम भरा रन हो सकता था और यहां जोखिम उठाना चाहेंगे नहीं डडू रेंजर्स इस स्थिति पे। रन आउट के रूप में वो चाहेंगे नहीं कि इस स्थिति पे विकेट गंवाए जाए क्योंकि 3 बड़े विकेट इस वक्त विश्राम कर रहे हैं। स्कोर बोर्ड पे सिर्फ 65 रन अब तक लगे हैं 3 विकेट के नुकसान पर। ओवैस बाबा जो कि पारी की शुरुआत करते हैं गेंदबाजी में, लेकिन आज 10वां ओवर उनसे कराया जा रहा है। इस बार गेंद को निकाला है और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए करारा स्ट्रोक इस बार आसिफ मंजूर के बल्ले से हाथ चलाते हुए और यहां जानते हैं कि रनों की जरूरत है डडू रेंजर्स को और कप्तानी पारी आज आसिफ मंजूर द्वारा देखने को मिल रही है। एक स्टार्ट उन्हें मिला है और वो इस स्टार्ट को इरशाद भाई कन्वर्ट करना चाहेंगे एक बड़े स्कोर में। As Baba in this over, we're back off length, pace off, and final delivery.
pace on, spoiling his over. It was a brilliant shot through mid-wicket. Asif Mansoor is a strong man. Those muscles coming into play, and he muscled it between mid-wicket and mid-on down to the boundary for 4 to finish the 10th over at halfway stage. Dadoo Rangers 69 for 3. Danish Muzaffar and Asif Mansoor, they're trying to put up a partnership, and we are into a rehydration break. 10 more overs to come, 60 legitimate deliveries. They need to get a partnership here. They need to put up and stitch a partnership in order to have that platform till the 15th over. And then we saw it happen the last day when Jahangir Lone launched himself into the 18th over, and he went after the bowling, and then the score went past 180. At one stage 160 was looking pretty difficult the other day, but then if you have hitters, if you have those big boy, if you have that big boy power in your dugout, they come and smash everything coming their way, provided you have wickets in your hand. And this is the partnership that's looking to unsettle the opposition. It's not about the run rate, that's only 6.90 at this point, but they need to just absorb this stage, the pressure that is there, a bigger pressure that's there, the pressure of scoring runs quite briskly. And now if they just soak that pressure, then keep the scoreboard ticking, the time will come, bowlers will offer them freebies, and it will be fairly easy for them to score up them. बिल्कुल कल भी जिस तरह आप बात कर रहे थे जहांगीर लोन से, और उनका भी मानना था कि परिस्थितियों को देखकर वो गेंदबाजी बदलते हैं, और उन्हें मालूम था कि कल विकेट में कुछ है, और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और निराश नहीं किया. 2 विकेट उन्होंने निकाले, और जिस तरह कल उन्होंने मिश्रण दिखाया गेंदबाजी में, और जो क्विकर वंस थी जिनको बल्लेबाजों को तंग किया, और बीच में जिस तरह क्लीन बोल्ड बल्लेबाज को किया, तो यहाँ पे आज नदीम डार की प्रशंसा करनी होगी. जिस तरह बॉलिंग चेंज आज नजर आए हैं, और जिस तरह ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों को कर रहे हैं, हालांकि आसान नहीं रहता जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हो, लेकिन उसके बावजूद ओवैस बाबा को आज होल्ड किया. कॉन्फिडेंस लेवल कल नीचे ज़रूर था, और 10 ओवर उनसे कराया. नदीम डार को फुल मार्क्स जाते हैं, जो खेल में इस वक्त बनी है सुल्तान वॉरियर्स पहले 10 ओवर्स में. Absolutely, keeping him till the 10th over, I think it was wise on his part, because Oaz Baba from last 3 and I think 3 or some 4 matches has not performed up to the mark. He used to bowl with a new ball, but coming into the 10th over and bowling with a slight older ball, it might work because he has got fielding protection. And comparatively, when he bowled in the power play, he had no protection protecting the boundaries, and he leaked runs because new ball, pace on, and the batsmen like to use those field restrictions to a good effect, and that might be a reason. Jahangir Lone might not be here, but Jahangir Lone is watching this live telecast on the official page of Bijbehara Premier League. The first ball of a fresh over has been stroked away onto the offside by Danish Muzaffar, the youngster. The batsman cross over for a single. Over number 11, Azim Rathar is going to bowl. On strike is Asif Mas. This time whips it away. Will look for 2. It's in the gap. Danish Muzaffar, fresh legs. Easy 2 in the end. They're trying to put up a partnership. They are trying to offer a bit of momentum to this innings. Has moved up to 72 for the loss of 3 wickets in over number 11. Asif Mansoor is the key. Extra cover inside the circle. Taps it in front of extra cover fielder. Batsman cross over for a single. That single takes the total to 74 now. 2 more balls to come in this over. Azim Rathar, again not a massive spinner of the ball. He likes to finish his over quickly. Put space on the ball once more, but this time it's driven straight to the fielder, fielding at point no run. Extra cover inside the circle. Cover is sweeping on the offside. Mid wicket on the boundary. Long on, long off. Short fine leg, and this time he cuts it beautifully. The ball is in the gap, and that's gonna go away to the boundary for 4. Brilliant shot.
using the depth of his crease, Danish Muzaffar creating space and hitting it away from the fielder at point. He had absolutely no chance, and the fielder at sweeper cover tried his best to get around in field. He too had no chance, and that is a timely boundary for Dadoo Rangers, taking them to 77 for 3. जी हाँ, समय है। अगर बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर की बात करें, कमाल का जो पिछला स्ट्रोक था, गेंद के आने का इंतजार किया और फिर बैकफुट पर वो स्ट्रोक जड़ा था आसिम दानिश मुजफ्फर ने, और एक और चौका, और इस बार दिशा दिखाते हुए वहां पर बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि दानिश मुजफ्फर के पास आज स्टेज है और आज अपने टैलेंट को शोकेस करना पड़ेगा इस बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़ी स्टेज पे अपनी टीम को मुश्किलों में निकालना पड़ेगा। 81 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ, और जो रिबिल्ड फेज चल रहा है यहां पे डडू रेंजर्स का। और इसको आगे का करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को, आसिफ मंजूर और दानिश मुजफ्फर की जोड़ी को। और कमाल की वापसी नजर आ रही है डडू रेंजर्स की ओर से, और यहां से प्लेटफॉर्म सेट है। 81 3 विकेट के नुकसान पर 11 ओवरों का खेल समाप्त, 9 ओवर अभी भी आने बाकी है, और आसिफ मंजूर और दानिश मुजफ्फर की जोड़ी मैदान में इस वक्त जिस गति से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सुल्तान वॉरियर्स को जरूर खलेगी यह पार्टनरशिप, और कोशिश रहेगी यहां से जल्दी से एक ब्रेक थ्रो सुल्तान वॉरियर्स के गेंदबाज चाहेंगे। और जिस तरह अभी तक रिशफल किया है नदीम डार ने अपने गेंदबाजों को, प्रशंसा करनी होगी नदीम डार की कप्तानी की। हालांकि आज जहांगीर लोन इस टीम का हिस्सा नहीं है। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, जो अब तक का इस विकेट ने जोड़ी ओवैस बाबा का एक बार फिर आक्रमण होता हुआ, 29 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है 32 गेंदों के अंतर्गत, बल्कि 22 गेंदों पर 29 रन जोड़े हैं इस दोनों खिलाड़ियों ने। ओवैस बाबा नए ओवर के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, जो कि पारी का 12वां ओवर होगा। 81 है 3 विकेट के नुकसान पर, जो इस वक्त करंट रन रेट है 7.36 के औसत से रन बन रहे हैं। 147 तक इस रफ्तार से जाएंगे, लेकिन इसे आगे देखना चाहेंगे डडू रेंजर्स की टीम। और इस स्थिति पे जो रिबिल्ड फेज चला है, कप्तान आसिफ मंजूर कप्तानी पारी खेल रहे हैं यहाँ पे अपनी टीम के लिए, क्योंकि जिस स्टेज पे आए थे 3 विकेट गवा चुकी थी डडू रेंजर्स की टीम, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और उनका बखूबी साथ दे रहे हैं दानिश मुजफ्फर। एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और आज उनके पास ये स्टेज है कि अपने इस टैलेंट को शोकेस करें और यहाँ पे दिखाएं कि वो एक बेहतरीन मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं डडू रेंजर्स के पास। ओवैस बाबा जब इस गेंदबाज ने गति दी है तो रन्स पड़े हैं इस विकेट के ऊपर, आगे आए और इस बार स्ट्रोक लिया, गैप में है शॉट, और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर दानिश मुजफ्फर को। कमाल का ये शॉट, graceful elegance, and that was brilliantly stroked, skipping down the track, waiting a slight pause and then using the pace. Beautiful shot for 4 from this youngster. He's looking good out there in the middle. He's betting on 18 and giving able company to his captain. बिल्कुल तेज मारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ गैप ढूंढा, और इस बार पुल चढ़ा है, गेंद गैप में जा रही है, उस और खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन बनाने का मौका। और पिछले शॉट की अगर हम बात करें, तेज मारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं दानिश मुजफ्फर, गैप ढूंढ रहे हैं, गेंद को टाइम कर रहे हैं, और इस खिलाड़ी की प्रशंसा करनी होगी। ये जो टैलेंट इस खिलाड़ी में नजर आ रहा है, ये जो प्रतिभा इस खिलाड़ी में नजर आ रहा है, क्लास झलक रहा है इनके शॉटों से। Absolutely. Talking about 2020 format, it's not about hitting the ball brutally. It's about picking up the gaps. It's about smart batting, rotating the strike. You need runs on the board, whether they come in the form of boundaries, singles or twos. Runs are runs, and the batsman, some batsmen always like to just play cricketing shots. And Danish Muzaffar, this is an ugly hoik across the line, easy as you like. The bowler obliges, easy catch number 2 for Oas Baba, wicket number 2 as well, and probably is a no ball. It's a no ball.
I think he heard that call from the umpire. He was trying to hit mid-wicket. For a fraction of a second, it looked like an ugly hoik. Since he heard that call from umpire, and that's why he was trying to hit it out of the ground. 28 not out from 20, 90 for the loss of 3 wickets. 2 more deliveries to come in this over. Over number 12. And to some extent, these two have taken their team to a stability. The partnership is 32. Using those wrists once again beautifully. Asking straight away for a couple of runs. But this time Danish Muzaffar was equal to the task, sending him back. So only a single takes the total to 91. 1 more ball to come in the 12th over. Asif Manzoor 29 and Danish Muzaffar 20 of 14. He is trying to put up some sort of a spark in this innings. Any spark, any momentum comes their way, they are there to grab it and they are there to score briskly. बिल्कुल इस गेम में वापसी की है डडू रेंजर्स ने और प्रशंसा करनी होगी इन दो बल्लेबाजों ने नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी की और जब भी मौका मिला है तो स्ट्रोक्स जड़े हैं दोनों बल्लेबाजों ने आसिफ मंजूर और दानिश मुजफ्फर ने और एक कमांडिंग पोजीशन में पहुंचाने का प्रयास दोनों बल्लेबाजों द्वारा हो रहा है 36 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों खिलाड़ियों द्वारा और एक रिबिल्ड फेज जो चल रहा है डडू रेंजर्स का आज कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ आसिफ मंजूर की अगर हम बात करें और दानिश मंजूर मुजफ्फर जो उनके साथ हैं उन्होंने क्लास स्ट्रोक्स लगाए हैं ग्राउंड के चारों ओर ऑफ साइड पर जिस तरह उन्होंने शॉट्स खेले ऑन साइड हो या ऑफ साइड हो ग्राउंड के चारों ओर दर्शनीय स्ट्रोक्स उनके बल्ले से देखने को मिले हैं लेकिन अब यहाँ स्टार्ट मिला है लेकिन इस स्टार्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा कल भी हमने देखा था यहाँ बहुत बल्लेबाजों को इम्तियाज लेफ्टी को एक स्टार्ट मिला था 36 रनों की पारी खेल गए थे लेकिन एक खराब स्ट्रोक खेल के वो आउट हुए थे तो अक्सर हमने देखा है कि लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन बल्लेबाजों द्वारा नजर आता है तो उस चीज का ध्यान दोनों बल्लेबाजों को रखना होगा Absolutely. If you get a sort of a momentum, you need to capitalize, not play rash shots, don't go after the bowling, try to just keep the scoreboard ticking. Odd boundary will come your way and if you're able to get 5 singles and a boundary 9-10 runs per over till the 15th over it's pretty okay. Azim Rathur to bowl his third 2 overs, no wicket for 18 so far. Danish Muzaffar on 20. Asif Manzoor is batting on 29. He's on strike. Azim Rathur left arm orthodox. Once again, flatter trajectory. He's trying to bowl quick. Danish Muzaffar stroking it away. Gently onto the onside. Will pick up a single. Moves to the other end and brings his captain back on strike. For short fine leg, deep backward square leg on the boundary, deep mid wicket. There is a man on long on. There is a man at wideish long off. There is a man inside the circle at extra cover at a catching position. Appeal for a stumping here. Will the umpire at square leg send it upwards? No. Probably he had his foot grounded there, back foot. Asif Manzoor. Yes, that back foot was grounded. Asif Manzoor is doing it in singles and twos at the moment. He's trying to dig down deep. He's trying to take this game as deep as possible because he's the captain and he wants to lead from the front. Next ball. He gets it fine in the gap. Fielder in pursuit. Will he be able to stop that? That's a fine stop. A deep fine leg boundary. The batsmen are coming back for the third run. But what a fine stop. Good work done by Oas Baba after bowling 2 overs on the trot. Throwing his body behind that and saving 1 run for his team. That is fine work in the field. You need to be on your toes as a fast bowler. And nowadays fast bowlers are very good fielders. Gone are the days. Once again misfield. That one is trickling away to the boundary. The ball will stop near the boundary.
The batsman will come back for 3 more. And now, insult to the wounds. The ball has crossed the boundary for 4. So 7 runs will be added, I think. 3 runs were completed. And then the throw came from the third man boundary. And nobody was backing up, and the ball went away into the boundary. So 7 runs, 10 runs in a space of 2 balls. This is sloppiness. You can't underestimate your opposition. You can't allow them to take a breather. There was that throw. Let's have a look. There was no need. That throw was from the wicketkeeper. There was no need to throw because the batsmen were well home and there was no one backing up as well. Glorious off drive. Might be 2 more runs here. No, they are content with just 1. That single takes the total. Scoreboard hasn't updated itself yet. Asif Manzoor. And Danish Muzaffar are the 2 not out batsmen in the middle. They're trying to just up the ante now. Not playing rash shots though. Trying to play good cricketing shots. Trying to maximize this run rate by ticking the ball, by ticking it the scoreboard over, and placing the ball in the gaps. And thus far they have been mighty effective in doing that. Asif Manzoor, 30 of 22. And the scoreboard has not been updated. 13 overs have been completed. We will come up with an updated score. Right now the fielder he's trying to rehydrate himself. If you look at the fielder coming towards deep mid-wicket boundary, wearing sunglasses, he's having a banana, and we are having a message from the sets of State Sports Live and Bijbehara Premier League official page. Heroin, one of the deadly drugs in the world, expensive, it hurts, it leads to those crimes, and the message is simple as it has always been: keep yourself drug free, keep your society drug free, say no to drugs, say yes to life, because life is precious, it's beautiful, and it is a God's gift. Back live, the batsman stretching himself, Asif Mars, not out on 30 of 22. The scoreboard hasn't been updated yet. Danish Muzaffar and him, so far they have been brilliant with this partnership in excess of 40. For the 4th over, Wasim Raza yet to come. He's padded up next. He likes to go big. Parvez Rasool, one of the iconic mega stars from this part of the world. 13 wickets and a century in that previous match, playing for Badurilia Cricket Club. He was absolutely unplayable in the second innings as well as first innings, grabbing 8 in the second, 5 in the first, and a fine 100 in the first innings as well. Going for the sweep, shout for LBW. Umpire stands his ground. These 2 umpires have done an outstanding job so far in this tournament, probably getting every decision up to the mark so far. Umpiring has been a hot spot. This one, a one-handed flick, and it has gone over the boundary, I think. We'll wait for the signal and we'll wait for the replays as well. And that has landed beyond the boundary. That's 6 runs. Unbelievable shot that.
Asif Manzoor is struggling, probably cramps there. A one-handed pick-up shot over mid-wicket and it lands beyond the boundary. Nadeem Dar to Asif Manzoor. First he was trying to go reverse. Once again, front pad flicked down towards deep mid-wicket. This time all along the ground. Fetches him another single. It's difficult for him. He's shaking his right leg at the moment. This time comes down the wicket. That has been nailed, but it has gone straight to the fielder at long off. For a fraction of a second, I thought that the ball came right from the middle. It came from the toe end of the bat, straight to the fielder at long off. Catch taken, wicket number 4. Dadoo Rangers have lost Danish Muzaffar. कमाल की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने की, लेकिन दानिश मुजफ्फर इस बार एलिवेशन मिला नहीं, आगे आए, एक बड़ा शॉट लेने का प्रयास, गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं, ऊपर ज्यादा गई और नीचे खिलाड़ी, कोई गलती वहां की नहीं और इस तरह से एक बड़ा विकेट और दानिश मुजफ्फर 28 रनों की बेहतरीन पारी खेल के वापस जाते हुए और वसीम रजा का आक्रमण विकेट के ऊपर होता हुआ कमाल की वापसी नजर आ रही है डडू रेंजर्स की ओर से। एक समय पे 40 के अंतर्गत 30 विकेट गंवाई थी इस टीम ने और ये आप दर्शक देख सकते हैं मैदान के चारों ओर खचाखच मैदान भरा हुआ है इस वक्त बिजबिहारा स्पोर्ट्स फील्ड और प्रशंसा करनी होगी बीपीएल मैनेजमेंट की और पूरा श्रेय जम्मू कश्मीर के स्टार परवेज रसूल को जाता है। लगातार मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट को और एक ब्रेक थ्रू यहां कप्तान नदीम डार ने दिलाया है। पार्टनरशिप ब्रेक करते हुए अभी तक 3 विकेट नदीम डार ने ली है और आज कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं और जिस तरह रिशफल अपने गेंदबाजों को किया है, हालांकि दानिश मुजफ्फर और आसिफ मंजूर की जोड़ी ने कमाल की वापसी करवाई यहां डडू रेंजर्स को और वसीम रजा एक्सपीरियंस्ड काम, वसीम रजा अब स्ट्राइक पे रहेंगे। एक प्लेटफॉर्म सेट है यहां से डडू रेंजर्स को एक बड़े टोटल तक जाने के लिए क्योंकि 6 ओवरों का खेल अभी भी आना बाकी और 170 तक देखना चाहेंगे डडू रेंजर्स की टीम। वसीम रजा अब सामना करेंगे। नदीम डार काफी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा, 3 ओवर 18 रन और 3 विकेट अब तक अर्जित कर चुके हैं। विकेट टू विकेट रहे हैं, कमाल के वेरिएशंस नदीम डार द्वारा देखने को मिले हैं। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और दूसरे छोर से आसिफ मंजूर अभी भी बने हैं विकेट के ऊपर, 34 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 ओवरों का खेल आना बाकी, 36 गेंदें हैं यहां डडू रेंजर्स के पास और देखना पड़ेगा कि कहां तक ये टीम जा पाती है। 112 हैं इस वक्त स्कोर बोर्ड के ऊपर और इन 36 गेंदों को कन्वर्ट करना चाहेंगे एक बड़े टोटल में, कम से कम 60 तक देखना चाहेंगे और 170 के आसपास डडू रेंजर्स यहां स्कोर सेट करना चाहेंगे। फिलहाल 2 बल्लेबाज आसिफ मंजूर और वसीम रजा अभी भी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, लेकिन दानिश मुजफ्फर की उस इनिंग्स की प्रशंसा करनी होगी। मुश्किल स्थिति में आए बल्लेबाजी करने के लिए, कमाल के शॉट्स उनके बल्ले से देखने को मिले। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक लेने का प्रयास किया था, कवर कॉर्नर पर उन्हें कैच किया गया था, वो एलिवेशन मिला नहीं जो दानिश मुजफ्फर देखना चाह रहे थे। रासिम रथर का आक्रमण होता हुआ बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्कि इम्तियाज लेफ्टी माफ कीजिएगा गेंदबाजी के आक्रमण पर नजर आ रहे हैं। गार्डन से वो गेंदबाजी करेंगे और अब तक 1 विकेट वो ले चुके हैं, 2 ओवर 19 रन और 1 विकेट अब तक इम्तियाज लेफ्टी के खाते में गया है। कुछ बदलाव एक बार फिर फील्डिंग में हो रहा है। ऑफसाइड के 30 गज दायरे की अगर बात करें, शॉर्ट थर्ड मैन बैकफुट पॉइंट रीजन पर शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी मौजूद। आसिफ मंजूर 20 ओवर वो खेलना चाहेंगे जिस तरह के फ्लो में नजर आए हैं और बीच आध में उन्होंने बड़े शॉट्स भी खेले हैं, परिस्थितियों को परखा है और जिस तरह गेंदबाजी हो रही है बिल्कुल भी पेस देने का प्रयास नहीं हो रहा है इम्तियाज लेफ्टी द्वारा। इस बार फिर बैक अप द हैंड, स्लोअर गेंद आने का इंतजार किया, स्ट्रोक जरूर खेला लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद। अच्छी गेंदबाजी रही है सुल्तान वॉरियर्स की गेंदबाजों द्वारा, फुल होमवर्क करके ये टीम आ जाई है। जिस तरह पेस आज बल्लेबाजों को दी नहीं है
और लगातार डिसीव किया है बल्लेबाजों को यहाँ पे. Absolutely. They have done a marvelous job today. 113 despite that effort from the bowlers of Sultan Warriors Baramulla. Look, you need to have roles divided in your team. Imtiaz lefty always comes up as a first change bowler, tries to pick up wickets, tries to slow the momentum. Well, nowadays what the teams do, they define roles to their players. 11 players with different roles going out into the field and then reaping rewards for their teams. वसीम रजा के कंधों पर अब जिम्मेदारी रहेंगी. यहाँ से जो मोमेंटम मिला है डडू रेंजर्स को, इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, एक बड़े टोटल तक जाना चाहेंगे, 170 तक देखना चाहेंगे डडू रेंजर्स, जिस तरह वापसी की है इस टीम ने. और आसिफ मंजूर का विकेट के ऊपर टिकना जरूरी. 20 ओवर अगर वो खेलते हैं तो स्कोर 170 के पार भी जा सकता है. कल हमने देखा था जहांगीर लोन ने पिछले 2 ओवर में 40 रन जोड़े थे. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गति बिल्कुल है नहीं और आसान रहता नहीं इस तरह की गेंदबाजी का सामना करना और बड़े शॉट्स के लिए जाना. और इम्तियाज लेफ्टी की प्रशंसा करनी होगी, जिस तरह वो गेंदबाजी में मिश्रण कर रहे हैं, लगातार पेस कम कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि अगर आप बल्लेबाज को पेस देंगे तो यहां पे रन्स पड़ सकते हैं. वसीम रजा अब स्ट्राइक पे रहेंगे. 115, 4 विकेट के नुकसान पर है डडू रेंजर्स. इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, दूर तो गेंद गई है लेकिन ज्यादा दूर नहीं, खिलाड़ी नीचे और कोई गलती की नहीं. और इम्तियाज लेफ्टी को एक और विकेट. डडू रेंजर्स का 5वां विकेट आउट होता हुआ और ये बड़ा विकेट है वसीम रजा का. एक बार फिर इम्तियाज लेफ्टी द्वारा बिल्कुल भी पेस दी नहीं, बड़ा स्ट्रोक लेने का प्रयास किया था वसीम रजा ने, एलिवेशन मिला नहीं, कंट्रोल में थी नहीं और नदीम डार नीचे, उन्होंने कोई गलती की नहीं. That's the beauty of bowling, those slow deliveries, those cutters, they never arrive and the batsmen are through the shot early. Wasim Reza, the shot was definitely on, but look at that, the shot was definitely on, probably not coming out of the middle of the bat, and that's why an easy catch at deep mid-wicket boundary. So a big breakthrough coming at the right time. Dadoo Rangers have lost their 5th wicket, and that momentum which had gone their way, which had shifted their way, is now gone with that 2nd wicket in a space of 1 over. Faisal Dar is the new man in. Faisal Dar, he too is a batsman who likes to hit the ball pretty hard. He's a decent striker. Asif Manzoor is batting on 43 of 29. He needs to bat through. Nadeem Dar to bowl his 4th. He's picked up 3 wickets thus far. He's been brilliant with that change in pace, lines and lengths. The first ball has been stroked away down the ground. Protection in the deep. Fielder gets around fields. The batsman will cross over for a single. The 44th run for the captain. He's playing a captain's knock, but 130, 140 might not be sufficient against the likes of Sultan Warriors Baramulla. They need to get in excess of 170, 180. On strike is the new batsman Faisal Dar. He strokes this one away all along the ground. Will they look for 2? That's in the gap and misfield. The batsman will pick up 4. Don't look for 2, don't look for 3. You have been gifted 2 more runs, 4 runs. Faisal Dar opens his account with that boundary and takes Dadoo Rangers to 120 for the loss of 5 wickets. This is the 16th over, 4 more overs to come after this. And Asif Manzoor, well, 44 of 30. We haven't seen any flourish of boundaries yet, any barrage of boundaries yet from his bat. But despite that, he has scored a 30 ball 44. That is the value when you are trying to survive and pick up 1s and 2s. The odd boundary does come your way, and that has been brilliant strategy thus far by the captain. The next delivery, this time punches it on the up, down towards deep mid-off. Fielder gets around fields. The batsman will pick up 1 more. 122.
The final delivery of the 16th over coming up. Asif Manzoor is on strike. Short fine leg, short third man. There is a backward point in place as well. Not getting it from the middle of that plate as he was trying to whip it across the line. Fielder was at deep backward square leg, but he will pick up a single and taking his team's total to 122 for 5. The final ball of the over and spell from Nadeem Dar. This time Faisal Dar not penetrating the field. It's a dot ball to finish. He has finished a great spell. He's picking up 3 wickets, leading from the front. 16 overs done, and Dadoo Rangers, after being put into bat in this all-important match against Sultan Warriors Baramulla, finding themselves in a good position as compared to that position which was precarious at one moment. 122 for 5, 16 overs, 4 more overs, 24 legitimate deliveries, 5 wickets in hand. If they can score in excess of 50, 170, 175 is on. चौबीस गेंदे का खेल अभी भी आना बाकी है डडू रेंजर्स के पास, और ऐसे में 5 विकेट मौजूद हैं उनके पास और 40 रन तक देखना चाहेंगे इन अंतिम 4 ओवर्स के लिए। डडू रेंजर्स 160-170 के करीब जाने के लिए, और आसिफ मंजूर का विकेट के ऊपर टिकना बहुत जरूरी। वो 20 ओवर खेलना चाहेंगे यहां अपनी टीम के लिए, और जो स्टार्ट उन्हें मिला है 44 के निजीगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अब तक एक छोड़ उन्होंने संभाल के रखा है, लेकिन अब एक्सेलरेटर पे पांव दबाने का वक्त आ गया है और बड़े स्ट्रोक्स के लिए उन्हें यहां से जाना होगा। इम्तियाज लेफ्टी ने आज कमाल की गेंदबाजी की है, 2 विकेट उन्होंने यहां निकाले हैं, बिल्कुल भी पेस उन्होंने जनरेट की नहीं है और लगातार बल्लेबाज को डिसीव किया है अपनी धीमी गति से। विकेट कीपर के अलावा शॉर्ट थर्ड में एक खिलाड़ी मौजूद, गली क्षेत्र पर एक खिलाड़ी, बैकफुट पॉइंट, शॉर्ट कवर, वाइडिश कवर पर एक खिलाड़ी आते ही बड़ा स्ट्रोक लेना चाह रहे हैं और गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जरूर जा रही है। उस ओर खिलाड़ी है लेकिन रोक नहीं पाएंगे और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। हालांकि कन्विंसिंग शॉट था नहीं इस बार आसिफ मंजूर के बल्ले से, लेकिन इन सर्कल को क्लियर करते हुए 4 रन और अर्जित करते हुए महत्वपूर्ण रन है ये डडू रेंजर्स के लिए। और 49 पर आसिफ मंजूर, केवल 1 रन चाहिए उन्हें अर्धशतक से दूर, और कमाल की पारी ये रही है आसिफ मंजूर के बल्ले से। कैमरा कौन बंद? हाँ? एक 5 विकेट के नुकसान पर इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर द विकेट अगली गेंद और एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक, और इस बार ऊंचा भी है। 6 रन मिलेंगे यहां आसिफ मंजूर को और 50 रन लीजिए आसिफ मंजूर के बल्ले से आते हुए। कमाल की बल्लेबाजी इस खिलाड़ी ने की है और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आज कप्तानी पारी के लिए आसिफ मंजूर ने ग्राउंड के चारों ओर स्ट्रोक्स खेले हैं, और इस बार उनके हक में गेंद और बाहर करते हुए बढ़िया स्ट्रोक। इस बार इम्प्रोवाइजेशन, हालांकि इस बार एलिवेशन मिला नहीं, अपील जरूर, एक और रन लेग बाय के रूप में। और ये कमाल की बल्लेबाजी इरशाद भाई हो रही है आसिफ मंजूर द्वारा। कप्तानी पारी जो स्टार्ट उन्हें मिला है और उसको बड़ा करना चाह रहे हैं आसिफ मंजूर। It has been a brilliant innings, but the innings hasn't finished yet. His role is still there. He has to play a good amount of role in this innings. 3 and a half overs remaining after this. 134 for 5, 2 more balls to come, but it has been one heck of an innings, a flawless innings from Asif Manzoor, and he has stroked brilliantly. He has played with some sort of a responsibility, and now he is breaking free. That's good fielding and extra cover inside the ring. One more run might have been more. Zorzolo was trying to back up. Extra cover. Fielder sweeping on the boundary at cover. As time, that's a free hit down the ground, and that's gone for 4. This time from the bat of Faisal Dar.
Imtiaz lefty in this over has tried to put pace on his balls, and he has gone the journey thus far. A couple of boundaries, and those have been brisk shots. 17 overs have been completed. It's 139 for 4. Faisal Dar on 10 of 6. Asif Manzoor 56 of 35. This is the beauty of putting up partnerships. That partnership with Danish Muzaffar, they might have lost Wasim Raza quickly, but Faisal Dar too is no mug with a bat. He comes, hits the long ball, and he is that big boy power. Jahangir Lone, what he does for Sultan Warriors Baramulla, Faisal Dar has got that skill and capability to match that innings which Jahangir Lone plays for Sultan Warriors Baramulla. गेंदबाजी में एक और बदलाव हो रहा है और गेंदबाजी के मोर्चे पे सुबोध भट्टी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। अब तक उनकी अगर बात की जाए 2 ओवर कर चुके हैं, 14 रन उन्होंने दिए हैं, लेकिन उन्हें विकेट मिला नहीं है। और आसिफ मंजूर पेस ऑन द बॉल देखना चाहेंगे, गति जितने मिलेगी उतने बड़े शॉट्स लगेंगे। और इस बार ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं, खिलाड़ी नीचे, और उन्होंने कोई गलती की नहीं, फिनिश कर नहीं पाए इस इनिंग्स को आसिफ मंजूर, लेकिन एक बेहतरीन इनिंग्स उनकी समाप्त। और डड्डू रेंजर्स को लगने वाला एक और झटका, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, इस बार एलिवेशन मिला नहीं आसिफ मंजूर को। और ओवैस बाबा वहां मौजूद, कोई गलती उन्होंने नहीं की, और आसिफ मंजूर का एक बड़ा विकेट यहां पर सुल्तान वॉरियर्स को मिलता हुआ 139, 6 विकेट के नुकसान पर। Wrong time to lose a wicket, and that too of a set batsman, the captain of the team, Asif Manzoor. But he's gone after playing a good innings, and the new man in to replace him is Nasir Ganai. Dadoo Rangers 139 for 6. Faisal Dar is still there. Subodh Bhatti amongst the wickets, and I haven't seen Shabir Lefty playing for Dadoo Rangers in this match. That's quite surprising. बिल्कुल, शबीर लेफ्टी आज हिस्सा नहीं है डड्डू रेंजर्स का, और ये सवाल आप जरूर कप्तान से कर सकते हैं। नासिर गनाई अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, और एक बड़ा विकेट सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। आसिफ मंजूर टीम की कप्तान, 54 रन की कमाल की पारी उन्होंने खेली जरूर, लेकिन जो 40-45 रनों की हम आखिरी ओवर्स में बात कर रहे थे, मोमेंटम मिला था, लेकिन 20 ओवर टिक नहीं पाए आसिफ मंजूर। और बाटी को विकेट मिलता हुआ एक अच्छा बॉलिंग चेंज। राज नदीम डार की प्रशंसा करनी होगी, जिस तरह रिशफल किया अपने गेंदबाजों को। 140 है बोर्ड पे, 6 विकेट के नुकसान पर। और इस बार गेंद को खेला है, लेकिन गेंद अलोंग द ग्राउंड जाती हुई, खिलाड़ी वहां पर लॉन्ग बाउंड्री पर, एक ही रन मिलेगा वहां पर बल्लेबाज फैसल डार को। बड़े शॉट्स के लिए अब जाना होगा यहां डड्डू रेंजर्स को। विकेट्स इन हैंड, 20-30 रन जोड़ना चाहेंगे इन 15 गेंदों के अंदर। और नासिर गनाई के पास वो क्षमता है, वो काबिलियत है बड़े स्ट्रोक्स लेने के लिए। बाटी गेंदबाजी कर रहे हैं, अगली गेंद, और इस बार फिर रिसीव किया, बैक अप द हैंड। लगातार ये रणनीति रही है, ये आप देख सकते हैं। एक बार फिर बाटी द्वारा कमाल की वेरिएशन सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के गेंदबाजों दौरान मिले हैं। नासिर गनाई पहले ही आए थे स्ट्रोक लेने के लिए, और देखा, और ये देखे बैक अप द हैंड, जी हाँ, बाटी द्वारा रिसीव किया वहां बल्लेबाज को। प्रशंसा करनी होगी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के गेंदबाजों को, जिस तरह पेस दी नहीं है अब तक। और इस बार आगे गेंद है, और इस बार उनके आंख में, और बहुत दूर गई है गेंद, 6 रन के लिए। That's that no-look shot. It was in the slot, and boy, it has gone a fair distance. That's a good hit. That's that strike that was needed. Elevation, distance, and it has gone many a mile. Great hit. Downswing. No-look shot. The head was still. Everything was in balance. Subodh Bhatti, 1 for 22 so far. Nasir Ganai, he can hit a long ball. Subodh Bhatti, prior to that delivery was brilliant. This time the other direction, in the gap, nicely done. Oh, that's a brain fade. What was going on? Where was Faisal Dar running? The batsman at the other end, he was not even looking at him.
And the fielder had gained the possession of the ball. The fielder waited for the batsman to come out of his crease and then threw the ball at the keeper's end. The keeper whipping the bails, and that comes to an end to that innings played by Faisal Dar. He's gone for 11. Dadoo Rangers lose their sixth at 147. Good throw from the deep, right on top of the bails, and Wasim Kachru whipping the bails in no time. Beg your pardon. That throw just beneath those three stumps. Wasn't a good technique shown by the wicketkeeper as well. He was behind the stumps. Thankfully the throw came onto his toes, and it was easy for him to gather that ball and whip the bails off. The wicketkeeper needs to make sure to come behind the wickets. That's the technique that's needed if you're collecting that throw coming from the deep. And the deep fielder, he needs to throw it on the bounce. बिल्कुल इसमें कोई दौराई नहीं है। और फिलहाल कुलविंदर सिंह का आक्रमण होता हुआ, जो कि पारी का 19 ओवर करेंगे। 148 7 विकेट के नुकसान पर। और जहांगीर लोन के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्यों इस मुकाबले का हिस्सा नहीं है, लेकिन लाइव कवरेज में लगातार बने हैं और अपनी टीम पर निगाहें हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, इस मुकाबले में जीत बहुत जरूरी है उनके लिए, इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। हवा में गेंद, विकेट कीपर नीचे, नो बॉल का इशारा जी हां अंपायर की ओर से आता हुआ, और फ्री हिट रहेगी यहां पे 2 रन और अर्जित करते हुए। विकेट कीपर ने हालांकि जरूर कैच लिया था। 2 रनों के साथ 150 रन पूरा होता हुआ डडू रेंजर्स का 150 7 विकेट के नुकसान पर। कुलविंदर सिंह यहां ओवर स्टेप कर गए और नासिर गनाई के पास मौका है बड़ा स्ट्रोक खेलने का। No ball, and now a free hit. The license is there for the batsman to go big. Once again deceives him with that slower delivery. Kulwinder Singh is bowling brilliantly. That lad from Rajouri, coming all the way from Rajouri, and he is bowling brilliantly. He bowled brilliantly the other day as well, and he's taking that pace off, rolling the fingers over the ball. Those are brilliant skills to keep the batters in check. Only 2 runs given away thus far in a space of 2 balls. One of them was a no ball. 3 balls he has bowled, so 2 will be considered legitimate. Once again he's trying to go big. Well, he's trying to go hard, and that's not helping his cause. Once again that slower delivery, staying low as well. 152 for 7. This is not enough for Dadoo Rangers. They need to get runs in the form of boundaries and sixes. Kulwinder, he has got protection everywhere outside the off stump. A good delivery, another slower delivery, no pace whatsoever, and the batsmen are finding it fairly difficult. Nasir Rasool and Nasir Ganai, the 2 not out batsmen there. Nasir Ganai is batting on 11, he's at the other end. Nasir Rasool is on strike. Long off, long on, man back at deep mid wicket, deep backward square. Fielder sweeping on the offside at cover boundary. That's a fine shot. That's brilliantly played. That's 4. That's that much needed boundary from Nasir Rasool's bat. Kulwinder Singh on that occasion trying to overcompensate, bowling too far outside the off stump, coming down that stride forward and then stroking it beautifully. No chance for the fielder this time, trying to go unconventional. Misses the line of the ball completely. It's a dot to finish the 19th over. It's 156 for the loss of 7 wickets. 1 more over to come. 6 legitimate deliveries. Nasir Rasool on 4. Nasir Ganai on 11. What do you reckon will be the score at the end of 20 overs?
6 गेंदों का अभी भी आना बाकी और 14-15 रन और जोड़ना चाहेंगे। 170 देखना चाहेंगे डडो रेंजर्स यहां से, क्योंकि 6 गेंदें अभी भी उनके पास हैं। और जिस तरह दोनों बल्लेबाजों के पास कैपेबिलिटी है बड़े शॉट्स खेलने के लिए, और एक बड़ा ओवर इसे देखना चाहेंगे डडो रेंजर्स की टीम। बाटी को एक बार फिर गेंद सौंपी गई है। आखिरी ओवर है पावर प्ले का और एक कॉम्पिटिटिव टोटल तक गई है डडो रेंजर्स, जिस स्थिति में थी 40 के अंतर्गत 3 विकेट गंवाई थी। लेकिन दानिश मुजफ्फर और आसिफ मंजूर की प्रशंसा करनी होगी, जिस स्थिति पे वो आए और एक पार्टनरशिप को बिल्ड किया और एक मोमेंटम दिया डडो रेंजर्स को 170 तक पहुंचने के लिए। और नासिर गनाई और नासिर रसूल दोनों ने दिखाया कि उनके पास क्षमता है बड़े शॉट्स खेलने के लिए। आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदें यहां आनी बाकी। बाटी के हाथ में है गेंद और नासिर गनाई सामने रहेंगे। और पहली गेंद धीमी गति से और यहां सिंगल चुराने का प्रयास, खतरा हो सकता है लेकिन अच्छी रनिंग। यहां बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, बैट पर ठीक तरीके से गेंद आई नहीं। एक बार फिर वो कटर देखने को मिल रही है और ये कहानी रही है। अगर हम बात करें सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की, नासिर रसूल पिछले ओवर में उन्होंने कमाल का शॉट जड़ा था कवर कॉर्नर पर और इस बार फिर क्रीज छोड़कर बाहर आए, लेकिन इस बार कनेक्शन हुआ नहीं। 4 गेंदों का आना बाकी। महत्वपूर्ण गेंदें हैं ये डडो रेंजर्स के पास और वो चाहेंगे कि इस ओवर को बड़ा बनाया जाए। फिलहाल पहली 2 गेंदें सिर्फ 1 रन आया है और बाटी जिस तरह मिश्रण गेंदबाजी में कर रहे हैं, कमाल के वेरिएशंस नजर आए हैं इस खिलाड़ी के। ओवर द विकेट अगली गेंद, नासिर रसूल को पटकने का प्रयास, लेकिन इस बार स्ट्रोक ले नहीं पाए। बल्ला पहले ही चला बैठे बल्लेबाज। शॉर्ट अप लेंथ गेंद थी, हालांकि पहले ही बल्ला चला बैठे थे नासिर रसूल की अगर हम बात करें। और ये अच्छा स्टेप देखने को मिल रहा है यहां पर बाटी द्वारा। पहली 3 गेंदों से सिर्फ 1 रन आता हुआ, जो 170 की बात कर रहे थे बहुत मुश्किल अब यहां से नजर आता हुआ। लेकिन ये लकी रन है इनसाइड एज और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। और ये गिफ्ट में रन आते हुए डडो रेंजर्स के लिए। बल्ला चलाने का प्रयास वहां किया था नासिर रसूल ने और 4 रन मिलते हुए, हालांकि कन्विंसिंग शॉट था नहीं। अंदरूनी किनारा लेके शॉट थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर और रन की आवश्यकता है। 161, 2 गेंदों का खेल अभी भी यहां से आना बाकी है। डडो रेंजर्स के 2 बड़े शॉट 170 के करीब डडो रेंजर्स देखेंगे। नासिर रसूल और इस बार इंप्रोवाइजेशन करने का प्रयास किया था और शॉट थर्डमैन के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, लेकिन डिसी हुए एक बार फिर। एक और विकेट, 8वां झटका है डडो रेंजर्स का 161 के अंतर्गत। और नासिर रसूल वापस जाएंगे, कोई जरूरत इस सिटी पे थी नहीं स्ट्रोक की। और आखिरी गेंद आना बाकी 170 की जो हम बात कर रहे थे, अब बहुत दूर है यहां से आखिरी गेंद आना बाकी। क्या 161 सुल्तान वॉरियर्स के सामने चैलेंजिंग टास्क रहेगा, ये देखने वाली बात। हालांकि डडो रेंजर्स के पास भी एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। दूसरी इनिंग्स में हम आपके साथ जुड़ जाएंगे जब चीज के लिए आएंगी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। हालांकि आज जहांगीर लोन के बगैर टीम इस मैदान के अंदर है कि कमी जरूर खल रही होगी, लेकिन नदीम डार ने आज जिस तरह कप्तानी की है, जिस तरह रोटेट अपने गेंदबाजों को किया है और जिस तरह गेंदबाजी की है, सुल्तान वॉरियर्स को प्रशंसा करनी होगी कप्तान की और खुश रहेंगे अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से। लेकिन जो स्टार्ट डडो रेंजर्स को मिला था उसको छोड़कर अगर 161 देखा जाए, शायद वो जब देखेंगे आसिफ मंसूर और दानिश मुजफ्फर जिस स्थिति पे बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिरी गेंद, इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं और जब तक गेंद को रोकेंगे दूसरा रन लेने का मौका और 2 रन अर्जित करते हुए 163 रन हैं बोर्ड पे जड़ दिए है डडो रेंजर्स ने और 164 का टारगेट रहेगा सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के पास। और जुट जाइएगा हमारे साथ ब्रेक के बाद जब चेस के लिए आएंगी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। जी हाँ, कुछ ही समय के बाद 164 रन रहेंगे। क्या संतुष्ट रहेगी इरशाद भाई यहां 163 से डडो रेंजर्स? 164 might not be enough on this wicket, but on a given day, Dadoo Rangers, they have a quality bowling lineup. They have got a decent right arm leg spinner, and they have got bowlers to fight it out for them. But 164
against a strong batting lineup of Sultan Warriors Baramulla might not be enough on a given day. But cricket, it's that sport where uncertainty prevails every now and then. Will be interesting when they come out to chase. We will be back with the chase of Sultan Warriors Baramulla, chasing 160 from their allotted 20 overs. On the other side of the break, live action will come your way. फजूल सिस्टम है यार, समझ नहीं आ रहा है। क्या ये